Hello friends, welcome back to Political Science Study Hub. So today I am going to start with a very basic topic, but you can say that it is of course important for you all to know about it. So liberty. The today's topic is liberty. What is actually liberty? That is you can everyone knows what liberty is. Liberty is freedom. Liberty means हम जो करना चाहते हैं वो हमको करना करने को मिलता है. वी आर फ्री टू डू थिंग्स, बट कब तक कर सकते हैं? जब तक वो सामने वाले को कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है, तब तक ही हमारे पास लिबर्टी है. सो लिबर्टी इज देयर बट विद रीजनेबल रिस्ट्रेंट्स, रिस्ट्रिक्शंस, दैट वी आर फ्री टू डू थिंग्स. अगर हम फ्री है करने के लिए, देन सामने वाला इज ऑल्सो फ्री, बट वी हैव टू डू व्हाट वी वांट टू डू. आवर नीड्स शुड बी reasonable. That should not be wrong. That we are not free to do a murder. लिबर्टी है लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन. ओके, लिबर्टी कंडीशनल होना चाहिए, एब्सोल्यूट लिबर्टी नहीं होना चाहिए. सो व्हाट इज लिबर्टी? आपके हिसाब से लिबर्टी क्या है? यू कैन कमेंट इट डाउन. ओके, एवरी पीपल हैव डिफरेंट व्यूज. पॉजिटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नेगेटिव लिबर्टी को सपोर्ट करेंगे. तो एवरीवन हैज डिफरेंट व्यूज. ओके, सो लिबर्टी हम लोग जानते हैं हमारे प्रियम्बल में है. What is there in our preamble? Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. तो इससे ही हम लोग को पता चल जाता है that how much important is what? Liberty. That liberty को हमारे preamble में भी include किया गया है. That means it is one of the most important things that is desired by everyone and everyone wants it. Okay, so liberty of thought, वी आर फ्री टू थिंक. हम लोग अपने हिसाब से सोच सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं. बिलीव्स हमारे खुद के होते हैं, ट्रेडिशनल कल्चर. वी हैव फेथ. ओके, वी हैव आवर ओन फेथ. वी आर फ्री टू हैव डू वर्शिप. हम लोग जहाँ चाहे जाके वर्शिप कर सकते हैं. दैट इज ऑल द थिंग्स दैट कम्स अंडर व्हाट? लिबर्टी. लिबर्टी के थ्रू हम लोग को ये सब करने का मौका मिलता है. ओके, नाउ लेट्स सी. थोड़ा डीप जाके देखते हैं कि लिबर्टी है क्या. लिबर्टी का मतलब क्या है? लिबर्टी इज ऑफ कोर्स मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, लिबर्टास एंड लिबर्टी. सो लिबर मीन्स ऑफ कोर्स फ्री. लिबर्टी मतलब फ्रीडम. फ्री है हम लोग करने के लिए कुछ भी, बट उस कुछ भी में भी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ कोर्स है ही. सो लिबर्टी दो शब्दों से जुड़ा हुआ है, टॉलरेशन और लिबरेशन. टॉलरेशन क्या है? टॉलरेशन है सहनशीलता. सहनशीलता से क्या पता चलता है? दैट इट अलाउज अदर मेन टू डू द ड्यूटी एंड इवन इफ दैट क्रिएट्स disadvantage to some, that should be tolerated. It is because liberty of one is restrictions to other. ओके, ऑफ कोर्स अगर हम जो चाहेंगे वो करेंगे हम लोग. इट्स नॉट नेसेसरी दैट द अदर पर्सन ऑल्सो wants it to be done. It can be against their हित, उनके हित के अगेंस्ट में हो सकता है. दैट इट मस्ट बी बेनिफिशियल फॉर अस बट नॉट फॉर अदर. इफ वी बाय अ कार, कार खरीद लिए हम लोग के अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, जाने के लिए. बट अगर हम लोग उसको ऐसी जगह से पार्क कर दें जहाँ पे डेली किसी को अपने बाइक या स्कूटी निकालने में दिक्कत हो रहा है, हमारे से लिबर्टी है, हम लोग कार खरीद लिए, वी आर ट्रैवलिंग, बट इट कैन बी a problematic situation for the other people. So there is toleration in liberty. So naturally, if one does not tolerate other action, the people cannot have liberty. So liberty to some extent is connected to what? Toleration. लिबर्टी एक्शन क्या है? लास्की, हेरोल्ड लास्की ने क्या कहा है? हेरोल्ड लास्की ने कहा है कि लिबर्टी असल में एक एटमोस्फेयर है, वातावरण है.
Now I want everyone to tell me in comment section that Lasky. Lasky का पूरा नाम क्या है? Lasky. What is Lasky's full name? And what is the book that is written by Lasky? Lasky का book का नाम क्या है? I want to know that in the comment section. Okay. It is not a one day process. Okay? That हम बोलते रहेंगे, but there should be engagement also. So I want the answers. What is the full name of Lasky and Lasky का किताब का नाम क्या है? Okay. So now let's move forward. लिबर्टी क्या है? लिबर्टी को हम लोग ने देख लिया, दो शब्द से मिलकर बनता है। लिबर्टी मतलब फ्री है और फ्रीडम मिलता है। ओके। लिबर्टी एक कॉन्सेप्ट है जो सबको बहुत पसंद है और सब चाहते हैं। कौन नहीं चाहता अपना लिबर्टी में रहना पाना? कौन नहीं चाहता? और सबका अपना अपना एक नोशन भी है, थिंकिंग भी है लिबर्टी का। ओके। बट सब समझ नहीं पाते हैं कि लिबर्टी है। A common man, what a common man will think. Common man thinks the liberty means no distance, मतलब उसको कोई भी रोक टोक नहीं होना चाहिए। भाई हम लोग आज़ाद शहर में आज़ाद कंट्री में रहते हैं, तो there should be no restriction. ओके। बट ये करेक्ट नहीं होगा। ये पॉलिटिकली या सिविल सोसाइटी में रहने वाले लोगों के लिए ये करेक्ट नहीं होगा। We of course have liberty, but that should be beneficial for us. हमारे लिए वो फायदेमंद होना चाहिए, बट वो सामने वाले के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। It should be not harmful for the other people. Okay? लिबर्टी भी सोच समझ के लिबर्टी मिलता है। लिबर्टी ऐसे नहीं है किसी का मर्डर कर दिए, चोरी कर दिए क्योंकि लिबर्टी है। दैट्स नॉट राइट। ओके। लिबर्टी बहुत जरूरी है ओवरऑल ग्रोथ के लिए, बट लिबर्टी इज लिमिटेड। लिबर्टी इज नॉट एब्सोल्यूट, लिबर्टी इज कंडीशनल, इट इज limited process. So there are few definitions, okay, that can come in any competitive exams, or you can also write in your answers to make your answer more beautiful, more attractive. सीली क्या कहता है? सीली ने कहा है कि लिबर्टी इज ऑपोजिशन ओवर पावर ओवर गवर्नमेंट, ओवर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के ऊपर थोड़ा सा ऑपोजिशन के अगेंस्ट वो थोड़ा जा सकता है, क्योंकि लिबर्टी का मतलब है पावर, लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम। और पूरा फ्री एक कोई भी पर्सन डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहा है वो पूरा फ्री नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स देयर इज अ बॉडी, गवर्नमेंट बॉडी, गवर्निंग बॉडी लुकिंग आफ्टर इट। ओके। कोल ने क्या कहा है? कोल ने कहा है लिबर्टी ऑफ सॉरी लिबर्टी इज फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस विदाउट एक्सटर्नल हिंड्रेंस टू हिज पर्सनालिटी। ओके। लिबर्टी मतलब अपने आप को आप एक्सप्रेस कर बिना किसी रोक के, बिना किसी एक्सटर्नल हिंड्रेंस के, मतलब बिना किसी बाहरी बाधाओं, रेस्ट्रिक्शंस। ओके। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। ओके। तो सीली और कोल से हम लोग को क्या पता चलता है? वो दोनों ही नेगेटिव लिबर्टी ऑफ एस्पेक्ट, नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबर्टी का बात करते हैं। वर्ड जैसे देयर शुड बी नो वर्ड, नो एक्सटर्नल हिंड्रेंस, एक्सटर्नल हिंड्रेंस के एक्सटर्नल हिंड्रेंस के बिना होना चाहिए लिबर्टी। सो व्हाट इज एक्सटर्नल हिंड्रेंस? जैसे ही आ गया विदाउट, देन ये बन जाता है नेगेटिव। के नेगेटिव एस्पेक्ट आ गया। दो टाइप ऑफ लिबर्टी विल कम अप फर्स्ट आफ्टर दिस। टीएच ग्रीन ने क्या कहा? टीएच ग्रीन से दैट फ्रीडम इज पॉजिटिव पावर ऑफ डूइंग और एंजॉयिंग समथिंग वर्थ डूइंग और एंजॉयिंग। ओके। पॉलिटिकली एक पावर, एक पॉजिटिव, सॉरी नॉट पॉलिटिकली, एक पॉजिटिव पावर है जिसके थ्रू हम लोग जो करना चाहे वो कर सकते हैं। ओके। समथिंग वी डू टू फॉर आवर एंजॉयमेंट। ओके। तो और सीडी बर्न क्या कहते हैं? लिबर्टी इज टू ग्रो वंस नेचुरल हाइट एंड टू डेवलप वंस एबिलिटी। ओके। ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके, टू डेवलप अ पर्सन फॉर हिज डेवलपमेंट ही मे डू थिंग्स। ओके। that comes under liberty. He has the liberty to do things. That comes under it. Okay. So next is Lasky.
लास्की ने क्या कहा है, लिबर्टी इज लार्जर मेंटेनेंस ऑफ दैट एटमोस्फेयर इन विच मैन हैज द अपॉर्चुनिटी टू बी एट एट देयर बेस्ट स्लेव बेस्ट सेल्फ, सॉरी नॉट स्लेव, बेस्ट सेल्फ। लिबर्टी क्या है? एक एटमोस्फेयर जो है, फ्री एटमोस्फेयर जो हम लोग को मिलता है, उसमें जो हम लोग को फ्रीडम मिलता है, उसका मेंटेनेंस कैसे होता है? थ्रू लिबर्टी, because liberty is not absolute, it is conditional, it is limited, it is based on everyone, not only one group of person, not only one person. If one person is having liberty, then same goes to the other one. Vice versa process. Liberty is सबके लिए है, not for anyone. Okay, according to Maclean, freedom is not the absence of all restraints, rather substituting of rational ones for the irrational ones. फ्रीडम सबके पास है, बट वो क्या है? फ्रीडम को वही फ्रीडम है जो रैशनल, मतलब जो लॉजिकल है, देयर इज लॉजिकल, देयर शुड बी लॉजिकल फ्रीडम। ओके, फ्रीडम इज देयर, मतलब यू शुड बी हैविंग लॉजिक, what the things you are doing, that should be logical, not illogical things you cannot do in the name of liberty, that I have liberty, I am living in free, but I can do so. No, that's not possible. Okay, that's wrong. Now we come to different kinds of liberty. नेचुरल लिबर्टी बहुत ही सिंपल है, प्राकृतिक स्वतंत्रता। हाँ, तो नाम से ही समझ आ रहा है क्या है, दैट मैन इज फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री, सो दे ही शुड बी गिवन, ही और शी शुड बी गिवन एब्सोल्यूट फ्रीडम। तो ये पढ़ के आपको कुछ याद आ रहा होगा किस थिंकर का, रूसो का, दैट मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन। ओके, दैट इज द फेमस डायलॉग ऑफ रूसो, बीइंग द रूसो। नेचुरल लिबर्टी है, बट हम लोग जब जब से पैदा हुए तब से ही हमारे पास लिबर्टी है। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं पैदा होने के बाद से। दैट इज व्हाट इज दैट, इट्स कम्स अंडर व्हाट, नेचुरल लिबर्टी। हॉब्स लॉ रूसो सब बोलते हैं दैट man has actual freedom only in the state of nature, but with the origin of state man has lost his natural freedom। तो ये एक बहुत बड़ा लाइन है। गॉड्स लॉ रूसो तीनों बोलते हैं कि मैन के पास फ्रीडम है, मैन हैज लिबर्टी, मैन आजाद है, स्वतंत्र है, कब तक? जब तक वो स्टेट ऑफ नेचर में है। मतलब स्टेट ऑफ नेचर क्या? बिफोर द बिल्डिंग ऑफ द स्टेट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले, जब तक स्टेट नहीं बना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट व्यू पॉइंट ऑफ हॉब्स लॉ एंड रूसो। नाउ गेटल क्या कहते हैं? गेटल कहते हैं सिविल लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ राइट एंड प्रिविलेजेस which the state creates and projects for its subject। ओके, सिविल लिबर्टी है स्टेट में, जो सिविल सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उसमें जो राइट ऑफ प्रिविलेज मिलते हैं लोगों को, दैट इज ओनली सिविल लिबर्टी। इन द स्टेट ऑफ नेचर ही वॉज फ्री लाइक बर्ड chirping and flying। ओके, स्टेट ऑफ नेचर मतलब स्टेट बनने के पहले, ओके, नेचुरल सिचुएशन में, बिफोर ओरिजिन ऑफ द स्टेट, everyone is free to do everything they want to do, but civilized society में after the formation of state, after the formation of society, ऐसा कोई भी लिबर्टी नहीं बचता है जो कि मॉरल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है, जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। ओके, लिबर्टी कोई लाइसेंस नहीं है। ओके, लिबर्टी इज ओनली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, so that they can live peacefully, so that they can enjoy their rights and freedom, but it cannot be used against others। Okay, enjoy करना है to the state, the real freedom can be enjoyed in the state and society, जहाँ की रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है ताकि किसी को हार्म ना पहुंचे लेकिन उनका लिबर्टी भी फुलफिल हो। सिविल लिबर्टी के बात हम लोग कर रहे थे। सिविल लिबर्टी इज विच मैन गेट्स बीइंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी इज टर्म्ड एज सिविल लिबर्टी। जो फ्रीडम, जो पावर, जो नॉट पावर, पावर ऑल्सो कम्स, बट जो फ्रीडम, जो लिबर्टी, जो स्वतंत्रता हम लोग को मिलता है एक सोसाइटी में रह के, एक सिविल सोसाइटी में रह के, अपना उन सिविल सोसाइटी का अपना रूल्स और नॉर्म्स होता है, दैट इज ऑल्सो सीन इन द सोसाइटीज, द अपार्टमेंट्स,
Even in house also, in our homes also, there are rules. Liberty. Rules provide us liberty to do things that is of course not harmful. हम अपने घर में रह रहे हैं, हमारे पास फ्रीडम है, हम लोग स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा फ्रीडम नहीं है कि हम लोग अपना बर्तन कोई भी कांच का शीशी तोड़ दे, अरे हम फ्री है, वी कैन डू, नो, वी हैव टू डू थिंग्स दैट आर morally right. Okay, this concept does not give absolute right according to one's wishes, but liberty can be enjoyed within the restrictions that is imposed by the state and society. जो ही मैंने कहा कि absolute नहीं है, दो तीन चीजें you have to remember, that liberty is not absolute, it is conditional, it is limited based on restrictions, but people can enjoy their freedom being in the under liberty, being in a civil society, following the rules. Okay, so natural liberty की बात की, हम लोग civil liberty की बात किए. Next क्या है, there is a two aspect of civil liberty. Okay, not to create obstacle in the way of others in the process of enjoying liberty. Okay, state protects man's liberty. Okay, हम लोग लिबर्टी इतना लिबरल लिबरल नहीं हो जाना है कि वो किसी और को हार्म पहुंचाए. ओके, स्टेट इज देयर टू मेंटेन दैट. ओके, सिक्योरिटी अगेंस्ट द गवर्नमेंट टू द ह्यूमन बीइंग. गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा एब्सोल्यूट ना हो जाए कि कुछ भी करने लग जाए तो there is what fundamental rights. Okay, now can anyone say in the comment section that fundamental rights is in which part of the constitution and from which article to which? Okay, बहुत ही simple सा question है. Fundamental right is everyone is studying from from school days only. So I need the answer. Fundamental right किस part में है constitution के and कितने से कितने article तक है. Okay, now let's move on. What is the fundamental rights? Everyone knows. Okay, that judiciary. Man has every right to go to the judiciary if their rights are harmed. Okay, there are writs that can be issued. Okay, constitutional remedies are there for everyone in a democratic country. Lasky, what is Lasky saying about liberty? That liberty is never real unless the government can be called to account, and it should always be called to account. Okay, when it's in its right. Government is very much important, and government plays a very important role. Okay, लिबर्टी लिबर्टी तब तक असली नहीं हो सकता है, वास्तविकता में नहीं आ सकता है, जब तक सरकार उसमें अपना रोल प्ले ना करे. सो गवर्नमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, state plays a very much important role in the formation of civil liberty to the people. Political liberty, as the name suggests, that politically a person should have the liberty to participate in the election process, to participate in the administration of the state, to vote and so on. Okay, that is very much simple. Okay, right to vote, right to be elected, right to hold public offices according to one's qualification, right to criticize the policies of the government. That is very simple liberty. All the liberties types are very simple and you may be aware about it. If आप नहीं जानते, then this video is for you all only. Then natural liberty, we have talked about civil liberty, political liberty, and now what's next? So next, oh sorry, political liberty is another name for democracy and freedom. And these freedom are possible only in a democratic state. According to Lasky, two conditions are necessary for the protection of political freedom. Oh sorry. So according to Lasky, two conditions are necessary for the protection of political freedom. Okay. सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलना चाहिए फॉर एजुकेशन ऑल्सो. दिस विल ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल. ऑफ कोर्स एजुकेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री में रहकर भी if we are not educated, if we don't know about our rights, then there is no use of liberty. Okay, तो अपने राइट्स को एंजॉय करने के लिए प्रॉपरली we should all be educated and aware about our rights. Okay, this is a repeated slide. Now comes economic liberty. Economic liberty against. By the name only you can understand. Okay, आर्थिक स्वतंत्रता. Okay, that is all. We can say base of all other liberties. हम कार कैसे खरीद सकते हैं? AC, TV, fridge. All our basic needs. How we can buy this thing when we are economically stable. Okay, so economic liberty, if we are at that position to buy things, that is, we can say, base of all other liberties. Okay,
Without this, a man cannot enjoy other liberties. Lenin has said that civil liberty is worthless without economic liberty. Economic liberty means work, security from poverty, unemployment, and etc. Okay. Liberty frees the man from the exploitation of master and gives him proper chance to earn his livelihood. Okay. We means what? मतलब economic liberty what we means that security from poverty. If we are economically stable, then only we are not poor. Okay, we are away from poverty. We are at least able to buy things that are basic needs, that are our basic needs, or the things which we want to enjoy. So economic liberty is very much important. According to Universal Declaration of Human Rights, economic what is the press should be free and fair, okay, so that the people get liberty. Included the rights are given below. What are the liberties that are included that have been said by Universal Declaration of Human Rights? Right to work. Everybody should have right to work. They should get reasonable pay. Okay. Right to form trade unions, right to rest and pleasure. Okay. Right to work का भी right होना चाहिए, pleasure रेस्ट पीरियड के भी लिए भी टाइम होना चाहिए. लास्ट की क्या बोलते हैं? Includes the right to participation in administration in the category of economic liberty only. Economic liberty implies democracy in the industry. Okay. तो right to participation in administration को भी लास्ट ने कहा इंक्लूड किया है इकोनॉमिक लिबर्टी में. National liberty, okay? No other nation can interfere in the working, in the freedom, in the liberty of the one nation, okay? We should have right to determine our own government. Every man and everybody of earth possess the right to self-government, okay? Every nation have the right to establish their own state. No other state can interfere in a state. Before 1947, of course, we were not having national liberty, but now, of course, we have national liberty, but that is again not absolute. Okay, we have friendship with other nations also. We have built alliances with other nations also. Now, what is religious liberty? We all have our own religion, and we are very much proud to follow our own religion. And we know that India is a country that which have a lot of diversity, so it is known as unity in diversity. So religion of course play a very important role for everyone. Nobody can tolerate any type of interference in religious matter. Okay, religion is very soft topic and everybody respect and love their own culture, tradition and religion. Okay. So liberty to visit temples, to visit church, to visit Gurdwara and masjid. Everybody have their own liberties of religion also. Okay, we know that India is a secular state and it provides the liberty to follow their own religion. Till what? Till then, it is not harming any other religion. Okay, but no religion is given. Besides, the state cannot impose any religion. Okay, religion. A state does not have the power to impose any particular religion on the people. So a person is free to follow their own religion. Okay, it is a personal matter of individual right. Individual have the freedom. Okay, उसके पास right है, उसके वो स्वतंत्र है अपना रिलीजन को अपने रिलीजन को फॉलो करने का, अपने धर्म को फॉलो करने का उसके पास पूरा फ्रीडम है. ओके. In communist state, individual have the right to religion freedom, but he does not have the right to propagate his religion. Okay, religion अपना रिलीजन का पास फ्रीडम है, रिलीजन फ्रीडम है, but does not have the right to propagate this religion. Okay, that is in communist state. मतलब he cannot advertise about his religion. Okay, प्रचार नहीं कर सकता है अपने religion का. But one point should be noted that religion liberty can be enjoyed only in restraints. Again, in this liberty also comes restraints that it should not harm any other religion. आप अपना religion follow करिए, but it should be not harmful.
to others. Okay. Now comes the moral liberty. Moral मतलब नैतिक स्वतंत्रता क्या है? According to Green, Rousseau, Kant, Hegel, and Bosanquet. Okay. इनके इन लोग फेवर है, ये लोग फेवर है what of moral liberty. Moral liberty क्या है? It creates a situation which enables an individual to become a rational being. Okay. एक इंडिविजुअल को रैशनल मतलब what we can say नैतिक स्वतंत्रता एक ऐसी स्थिति है जहाँ व्यक्ति मॉरल बनता है तो नैतिक होता है ऑफ कोर्स दैट इज इंडिविजुअल में थिंक करेक्टली रैशनली जो सही है वो सही का साथ देगा इंडिविजुअल देन इट इज moral liberty okay in which a person is able to distinguish between what is right and wrong सही और गलत क्या है खड़ा हो सकता है सही और गलत पहचान सकता है और जो सच क्या है झूठ क्या है दैट ही कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम रिलीजियस चीजें क्या है और इररिलीजियस चीजें क्या है अ पर्सन हु इज perfect in all the things we can say then we can say that he is morally correct then he is following moral liberty okay therefore should be morally free and the state should create such necessary situation that a moral किसी को मॉरली भी कोई हार्म ना पहुंचे मॉरली भी स्वतंत्र हो अ पर्सन नैतिक स्वतंत्रता भी मिले that is also taken care of by the society by the state by the government okay it is concerned with inner consciousness of an individual okay मतलब अंदर से एक बात ये इंसानों में लोगों में होना चाहिए या उनको वही काम करना चाहिए वो उनके पास इसका भी फ्रीडम है कि वो सही क्या है गलत क्या है वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं बट इट अगेन इट शुड बी नॉट मॉरली इनकरेक्ट ओके इट शुड बी मॉरली करेक्ट नाउ व्हाट इज द सेफ गार्ड्स ऑफ लिबर्टी लिबर्टी को बचा के उसको सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है इफ देयर आर फ्यू पॉइंट्स हियर ओके eternal vigilance okay what is eternal vigilance among the people vigilant होना चाहिए people को that is very much important okay सतर्क होना चाहिए इंसान को खोए हुए अंधे बन के नहीं रहना है लिबर्टी क्या है जानने की जरूरत सबको है वी शुड बी एवरी टाइम वेरी मच विजिलेंट इनको उसको अपने आँख खोल के रखना है कान खोल के रखना है और हर चीज को समझना है सही क्या है उसके लिए खड़े रहना है झूठ क्या गलत क्या वी कैन अपोज अगेंस्ट इट लिबर्टी है टू stand for the correct one stand for the right thing what is should be done by every citizen democratic government होना चाहिए of course again अगर democracy है then it will of course look after to follow the liberty सबको मिले then cooperation होना चाहिए people और government के बीच अगर गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो अगर पीपल फॉलो नहीं करेंगे then it is not helpful for finding the people जो भी गलत people should of course help the government to finding that who is breaching the law जो कि अपनी लिबर्टी का मिसयूज कर रहा है so of course there should be cooperation fundamental rights again there is there in the constitution fundamental right एक शील्ड है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारे फ्रीडम को और प्रॉपर कंडीशन क्रिएट करता है जिसमें हम लोग को हम अपने लिबर्टी को एंजॉय कर सकते हैं राइट इक्वल राइट सबको मिलता है लिबर्टी इक्वल लिबर्टी थॉट एक्सप्रेशन फ्रीडम बिलीफ वर्शिप सब मिलता है what in through the help of fundamental rights. Separation of power okay, should be there. It also helps in preventing any organ to be absolute. Again, absolute liberty, absolute power किसी organ के पास किसी भी इंसान के पास होना is not good. Okay, Montesquieu has said about separation of power is essential condition for enjoying liberty. Okay, so separation of power is also very much important point. Independent judiciary होना चाहिए judiciary powerful होना चाहिए and it is the biggest protector of liberty. So only intelligent and impartial person should be appointed as judges. Okay, judge is a very important role. Judges play very important role for the protection of the liberty. Then he should be of course what impartial one, intelligent one. Yes,
The tenure should be long and high pension should be paid after retirement because they of course play very important role. Okay, whenever any individual or government जो violate करता है liberty of individual का, then that person can of course go to where judiciary. That person can go to the court, okay, for their protection of liberty. Rule of law, okay, nothing is above the law. Everyone is equal in front of the law and nobody is above the law. Law maintained होगा, then liberty is also provided to the people. Where there is no rule of law, there only powerful and rich will be enjoy the freedom, okay. बस powerful and rich को freedom मिलेगा, if law नहीं है, they will of course dominate the weaker ones. So rule of law is also very important for the protection of people. Absence of special privileges. Lasky talks about that there should be absence of for special privileges. Okay, every man should have equal right. Okay, nobody cannot be given special privilege on the basis of caste, religion, or any status. Okay, it will of course provide negative impact on liberty. आप एक पुलिस ऑफिसर हो चाहे आप एक लॉयर हो आप इंजीनियर हो बट इफ यू आर ब्रेकिंग लॉ देन हैव you will be get punishment. You should get punishment. Nobody is above the law. Now, decentralization of power is also important. Centralization of power is dangerous for human liberty. So, there should be decentralization also. Political education is very much important, as I told earlier also. Political education is very important for everyone. Education रहेगा, then people will be aware of the liberty and then only they can enjoy their liberty. Written constitution is also one of the very important things for the safeguard of the liberty. Okay, written constitution minimizes the word, the misuse of the power. Now we are going to talk about two form of liberty. Isaiah Berlin has talked about two form of liberty. Okay, in his essay on liberty, Isaiah Berlin, that was published in 1969, he has talked about two form of liberty, negative and positive. Okay, so what is the negative? Negative concept of liberty we have talked earlier also. A man is said to be free to extent that his action and movement are not controlled by any other man or body of man. A person is free to do everything and no restraints is there. Okay, on him, that is comes under negative liberty. Liberty will be called negative. Cub. When individual action even unobstructed by other, a person is not being told that he is wrong. Okay, he can do anything because he have liberty. Then that is negative liberty. Okay. Now, what he has published in his book I told earlier, Berlin termed being free as not being interfered with by others. Okay, non-interference जब होगा then there is a wider freedom. That is what negative freedom talk about. This concept was harkened by the Leviathan book of Hobbes. He has also defined liberty is the elimination of मतलब Hobbes ने भी support किया this form of liberty को elimination of external barrier. Okay, man is free and he can do everything but तब तक ही free है जब तक एक state form नहीं हो जाता है because we know in the state there are rules that is they are required to be followed by everyone. Mill क्या कहते हैं? Mill is also a supporter of negative liberty, the sole end for which mankind are warranted. Okay. Again, he also talked about this only. He has talked about on his book on liberty. Okay. लिबर्टी क्या लिबर्टी है सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए फ्रीडम होना चाहिए दैट अ पर्सन कैन फॉलो हिज फ्रीडम लिबर्टी फॉर हिज ओन सेल्फ प्रोटेक्शन लिबर्टी को अगर टोका जा सकता है लिबर्टी कैन बी स्टॉप ओनली when it is harmful to others. Okay, his own good either physical or moral it's not only sufficient for one own or only one person's good and for his only
For his enjoyment or liberty cannot be there. It should not be harmful to others. Okay. Then positive liberty. What is positive liberty? The positive meaning of liberty may be defined that we can say that individual is his own master. The life and decision of one will depend on the individual themselves. The individual is the instrument of own affairs. Okay, the positive sense of freedom is concerned with questions. Okay, what questions? Like negative liberty is a proponent aim to safeguard at least certain areas whereby individual is free to do what he desires. Okay, without any external roadblock. Okay, any external hindrance. But positive liberty aim to expand the sphere of self-defined activity as much as possible. Okay, for instance, the definition of restriction to action include internal restraints. In that negative liberty, we talked about any kind of external hindrance. Okay, there cannot be any kind of external restraints, then that is negative liberty. But positive liberty also talk about internal restraints. Okay, in his theory, there is talking about internal restraints. What Rousseau says that Rousseau considered becoming a slave to one's impulses or desire as is the polar opposite of freedom. Our needs are heterogeneous and result they arise as a result of upbringing and of environment in which we live. Okay, given into our aspiration, according to Rousseau, is fundamentally comparable to giving into the wants of others. We must choose to satisfy our desire. What Rousseau is saying that a person should be here. We consider morally right. We are. We should have that logic. We should have that much of mind that we choose things that are, of course, that will satisfy our desire. But that should be logically right. That should be politically right. That should be morally right. Okay. That is regarded as truly our own and representative of our own self. The impulse of mere appetite is slavery, while obedience to a self-prescribed law is liberty. Okay, for only our benefit, we cannot think all the time for our own benefit. We should be morally also logically right also to get our liberty. Means internally we have restraints. Could we should be knowing that what restriction we should implement, we should have. Nobody other external institution is not coming to say to you. You own self, you have that logic to differentiate between right and wrong. Emmanuel Kant also talks about this kind of liberty only. Okay, how one could have one liberty, once have liberty, should be that they are a result of the environment in which they are living. Okay, there should be nothing that blindly everyone will accept. Okay, to be considered free, one must determine or choose among one's preference based on the desirable concept. He also talks the similar like he also talks similar like Rousseau. Okay, that we have the freedom, we have the liberty to do things, but that should have a reasonable concept that is accepted and approved by the society, by others. Green also talked about in his essay Regulation and Freedom of Contact that we all should agree. We agree that freedom rightly is the greatest of the blessing, that it is attainment is the true end of all efforts of citizen. But when we speak of freedom, we should be careful about what we mean by it. Okay, we does not mean freedom. We do not merely means freedom from what is freedom? Freedom from restraints or compulsion. We do not merely mean freedom to do as we like things. We do not mean a freedom that can be enjoyed by one man or one set of men as the cost of loss of few of others, of freedom of others. Okay, फ्रीडम इज ये नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमको पसंद है. फ्रीडम वो नहीं है जो बस एक ग्रुप ऑफ पीपल बस एंजॉय कर रहा है. फ्रीडम वो भी है जो वो है फ्रीडम जो कि सबको मिल रहा है. So it should be of course be logically and morally and politically economically right. So that's all for today's class. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.